Hello student, welcome to Param Guru Pathshala English Medium School, Sarsa. Myself, Kritika Bhatia, class 5th. Today's subject is Social Study, Unit 2nd. Topic cover is Parallel and Meridian. Okay, the unit name is Parallels and Meridian. First of all, we learn about the globe. In a chapter 1, we also learn about the globe and map. Okay, so let's revise again with the globe. A globe is a model of the earth. It represents the earth in a simple and accurate way. It shows the shape, size and location of the continents and water bodies, and also helps us to understand the earth's movement on its axis and around the suns. Okay, so do you know about the word globes come? The word globes comes from the Latin word globus, that's meaning a round mass or spherical. A great name Kratz is credited with the making of the first globe. Okay, let's revise again. A globe is model of the earth. When we look at the globe, we see several countries and places and market on it. Okay, to find any place on a globe or map, we use a system of imaginary lines. ओके अगर हमें किसी प्लेस को ढूंढना है तो हम इस काल्पनिक रेखाओं इमेजिनरी लाइंस के थ्रू उस जगह को ढूंढ सकते हैं, जो फाइंड कर सकते हैं. ओके, विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ. ओके, दिस इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज द latitudes and longitudes. Latitudes means sleeping lines and longitude means standing lines. Okay, the point on the north where longitude join is called north pole. जहाँ से longitude start होता है, उस जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं. ओके, आई सी दिस इज okay, this is the north pole. Okay, and the point on the south where they join is called south pole. और जो लाइन यहाँ से निकल के जाती है उसे एंड होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल. ओके, नेक्स्ट इस अर्थ rotates around an imaginary lines called the axis, which has two end points. How many points? Two end points. Okay, first is north pole, second is south pole. Okay, called जब दो पॉइंट्स जहाँ पे रुकते हैं उसे हम बोलते हैं पोल्स, और उन पोल्स के नाम क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, नेक्स्ट इज इक्वेटर. An imaginary lines drawn midway between the north pole and south pole divided the earth into two equal parts. Okay, this is divided into two equal parts. Okay, this line is the longest line of latitude and is known as the equator. Okay, we know about the imaginary line. Okay, the first is north pole, second is south pole, and they divided into two parts. This called is equator. Okay, so the imaginary circles line on the globe that runs midway between the north pole and the south pole, it divided the globe and earth into two equal waves. It is the longest and the most important latitudes. Okay, latitude means sleeping lines. Next is parallels. Okay, the full circle that run from east to west are called parallels या lines of latitudes. एक ही बात हुई, उससे lines of latitudes का नाम है parallels. Okay, I again repeat,
These are the set of imaginary circles. You see about this picture, okay? Drawn on the surface of the globe, all the parallel circles from equator to the poles are called parallels of latitude, okay? Latitude are measured in degree 0. Next is North Hemisphere. The part of the earth from the equator to the North Pole is called Northern Hemisphere. North Pole is called Northern Hemisphere. Okay? And the part of the equator to the South Pole is called Southern Hemisphere. This one. Okay? Northern Hemisphere. The part of the earth which lies on the north of the equator is called Northern Hemisphere. And the Southern Hemisphere, the part of the earth which lies to the south of the equator is called the South Hemisphere. Okay? Characteristics of latitudes. Okay? First is latitudes are complete circle except north and south poles which are points. Okay? The length of the latitude डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स. मैंने आपको बताया था जैसे जैसे लाइंस बढ़ती जाएगी वो जैसे जैसे हम लाइंस को हम कवर करते जाएंगे उसकी लाइंस कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना. बिकॉज ग्लोब का शेप कैसा है, स्क्वायर है, मतलब राउंड शेप में है. ओके जैसे जैसे आप उस पर कोई सर्कल करेंगे, सपोज आपने एक ऑरेंज लिया, आप उसके एक पॉइंट से मार्क करते जाओ, आपकी लाइंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ओके उसी तरह से जब हम ग्लोब पे मार्क करते हैं तो उसकी लाइंस कैसी होगी, डिक्रीज होगी. ओके latitudes are at equal distance from and one another and they do not touch or cut interested with the one another. जब भी लाइंस एक कवर होती है तो ये ना एक दूसरे को टच नहीं होती है. ओके ये अपनी दूरी, अपनी जो डिस्टेंस होता है ना उसको मेंटेन करते करते आगे बढ़ती जाती है. ओके measuring number of latitudes. Measuring of latitude start from the equator which represent the 0 degree. इसकी नंबरिंग कैसी होती है, 0 डिग्री से स्टार्ट होती है. तो इक्वेटर का साइंस कितना होगा, 0 डिग्री. ओके एंड द नॉर्थ पोल इज मार्क एज 90 डिग्री नॉर्थ. और जो नॉर्थ पोल था उसकी नंबरिंग कैसी होती है, 19 डिग्री नॉर्थ से, और साउथ पोल की 19 डिग्री एस. एस मीन्स साउथ. ओके सो लर्न दिस. Other parallels are marked from 0 to 90 डिग्री. और बाकी जितने पैरेलल्स होते हैं उनकी मार्क कैसे होती है, 0 to 90 डिग्री से. ओके द पैरेलल्स दैट आर टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर मार्क्ड एन मीन्स नॉर्थ, and those to the south of equator are marked as. S means south. Okay the distance between ईच पैरेलल इज 1 डिग्री. इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 1 डिग्री का. ओके दे आर 90 लैटिट्यूड्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द 19 इन द साउथ हेमिस्फीयर. ऊपर कितना है नॉर्थन हेमिस्फीयर में 90 डिग्री, तो साउथ नीचे भी इतना ही सेम होगा, मतलब 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर. ओके ऑल टुगेदर देयर आर 181 लैटिट्यूड इंक्लूडिंग इक्वेटर. सो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हुए is 181. 19 north plus 19 south is equal to 180 and 1 डिग्री किसका हुआ, इक्वेटर का, इसलिए कितने हुआ टोटल 181. ओके सो फैक्ट अबाउट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ओके देयर आर 181 पैरेलल्स ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ओके द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल and is also called the great circle. इक्वेटर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स होने के कारण इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है. ओके ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके ऑल पैरेलल्स आर सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल which look like points. Okay the length of parallels keep decreasing as we move away from the equator toward the poles. Okay
the length of the parallels keep decreasing from the equator toward the poles. Okay, all parallels are located at the equal distance from the each other. Okay, like parallels line, the parallels of lines of latitudes never meet each other. Okay, next is numbering the parallels. Okay, we start from the equator and mark on as 0 degree latitude. Okay, lines of latitudes are labeled in degree, right, as 0 degree. Okay, and the equator is the 0 degree and the other parallels are marked on 0 degree to 90 degree. Okay, the parallels are also marked as N or S according to their location. ओके, लोकेशन के हिसाब से उसकी डिग्रीज और उसके साउथ है नॉर्थ है ये डिसाइड होता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज द पोल्स, नॉर्थ पोल इज रिटन बाय 90 degree north and the south pole written as 90 degree south. There are 90 parallels in the north hemisphere and 19 parallel in the south hemisphere. Okay, it's equal to कितना हुआ 180 degree and the parallels are drawn at the interval 0-1 degree. Okay, so 180 plus 1 is equal to how many? 181. So how many parallels? So there are 181 parallels. Okay, important parallels, you already know about the equator is 0 degree, north pole is 90 degree north and south pole is 90 degrees south. Okay, there are 4 other important parallels. They are called, first is Tropic of Cancer. Okay, second Tropic of Capricorn is denoted to 23 and 1.5 degrees south. Arctic Circle is 66 degree 1.5 north and our Antarctic Circle is 66 and 1.5 degree south. Okay, let's revise again. First, a north pole, this is the Arctic Circle. Okay, its numbering is 66 and 1.5 degree north. Okay, इसके नीचे है Tropic of Cancer. Okay, this line is called Tropic of Cancer. They denoted the 23.5 degree north. Same is the South Pole. Okay, Antarctic Circle is denoted the 66 and 1.5 degree south. It is South Pole and Antarctic Circle के just ऊपर है Tropic of Capricorn. In the south is 23 degree 1.5 degree south and middle line is equator. Okay, so फर्स्ट लाइन इज टॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास में जो है उसे टॉपिक ऑफ कैंसर और जो साउथ में आती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नॉर्थ पोल के जस्ट पास में उसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और जो साउथ पोल के आसपास है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल. ओके, लेट्स डिवाइड द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स आर, दे आर कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. ओके, next topic is meridian. Okay, we know about the parallels and now next topic is meridian. Meridians, there is another set of line which run from north to south. Okay, वो जो latitude थी वो east to west थी. Okay, और ये north to south है. So which run from the north to south on the globe, these lines are known as meridian and another name is lines of longitude. Meridians are imaginary lines that run from north to south. Okay, imaginary line which run from north to south are called meridian or lines of longitude. Some fact about the meridian. All meridians of the same length. Okay, all meridians are lines of longitude are the same length. इसके लेंथ कैसी होती है? सेम होती है. ओके, सी दिस इज कॉल्ड मेरिडियन, मतलब स्टैंडिंग लाइन या लॉन्गिट्यूड्स. ओके, इनकी जो लेंथ होती है ये सेम होती है और डिस्टेंस भी सेम होता है. ओके, ऑल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर.
इसके जो पास जो डिवाइडेड करती है टू लाइन्स को, इट्स कॉल्ड इक्वेटर, यू नो अबाउट दैट, बट ये इक्वेटर को टच भी नहीं करती है. ओके, सो मेरिडियन हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ओके, ये ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट साइड है, एंड नॉर्थ ऊपर एंड साउथ नीचे. ओके, सो इज दिस measure distance in the east to west direction. Meridian cut the parallels at the right angle of 90 degree. Okay, so the distance between any two meridian decrease as one move away from the equator toward the poles. Okay, the longitude do not run parallels to each other but meet at the two ends. Okay, the maximum distance between any two meridian is at the equator as one moves away from the equator and goes toward the poles. The distance between any two meridian is decreased. जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, मेरिडियंस की लाइंस भी डिक्रीज होती जाती है, सेम एज लैटिट्यूड्स की जैसे. ओके, so let's revise again. Meridian cut the parallels at the right angle 90 degree and meridians help to measure distance in the east to west direction. Numbering of the meridians. Okay, the prime meridian passes through Greenwich. It is also known as the Greenwich meridian. Okay, हम जो उसके पास से जाती है हमारे प्राइम मेरिडियंस लाइन्स के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन. Okay, remember that the meridian that passes through Greenwich was marked as 0 degree and the name of prime meridian. The longitude of the place is measured east or west of the prime meridian. Okay, and the full circle that 360 degree. They divided into 4 parts. Okay, 90 degree east, 19 degree south, 19 degree east, north and 90 degree west is equal to 360 degree. Okay, are drawn at an interval and is denoted to 1 degree. Okay, so there are 180 meridians towards the east and the prime meridian. Okay, and the 180 degree meridians toward the west of the prime meridian. The meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line, and those they are 360 meridian. Okay, how many meridian? 360. And how many parallels? Is 181. Okay, so this meridian in the east and the mark of E, and those toward the west are marked as W. Okay, and the meridian of 180 degree east and west from the same line known as the international day. जब ये लाइन सेम एक जगह पे जाके पॉइंटेड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डे लाइन. ओके, जो हमें टाइम बताता है. ओके, इसमें 1 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं. उसी तरह से 360 डिग्री का एंगल जब बनता है तो उसमें 1400 मिनट्स होते हैं. ओके, ये हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे. ओके, so all the meridians are the same line. Okay, the distance between two meridian is the maximum at equator and it decreases from equator towards the poles. All the meridians meet at the poles. Okay, and the meridian cut the parallels at right angle. Okay, जिस कट करती है उसको कहाँ से कट करती है? राइट एंगल से, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री. ओके, एंगल्स मीन्स दिस. ओके, latitudes, sorry, longitudes, and this is the latitudes line, and this is the angle of 90 degree. Okay, next is measuring numbering of meridian. Okay, the prime meridian that passes through Greenwich is known as the prime meridian and its value of 0 degree. Greenwich is the place near Greenwich line किसे कहते हैं? जिसके नियर में लंदन वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड. ओके, दैट्स मीन्स ग्रीनविच लाइन. लॉन्गिट्यूड आर मेजर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन.
There are 180 meridian longitudes of the east of prime meridian and 180 meridians of the west of prime meridian. There are 360 meridian in all, and meridian toward the east represent from the E, and those to the west are marked with W. W means west. The 180 degree east and 180 degree west meridian are the same line. Okay. लोकेटिंग प्लेस विथ पैरेलल्स एंड मेरिडियन. ओके, अब हम इस पे प्लेसेस को कैसे लोकेटेड करेंगे उसके बारे में सीखेंगे. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑफ द ग्लोब. ओके, दिस इज द नेटवर्क ऑफ द लाइन ऑफ द ग्लोब विच इज कॉल्ड अ ग्रिड. ओके, सो व्हाट इज द ग्रिड? ग्रिड मीन्स दिस, ये जो लाइन जाली दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड. ओके, Any place on the earth can be located with the help of the grid. ये grid हमें help करता है किसी place को जानने में. Okay? To know the location of the place, we should know the values of the latitude, north-south direction. Okay? And the upside is north, downside is south. Okay? And the right-hand side your west, and left-hand side your east. Okay? The point where the latitude and longitude intersect the cut, okay, each other is the location of the place. जहाँ पे ये कट होती है 90 डिग्री का एंगल बताती है, उस वहाँ पे प्लेस लोकेटेड होता है. ओके, सो हाउ टू लोकेटेड प्लेस? द पैरेलल्स ऑफ लाइन of latitude and meridian or lines of longitude cut each other at right angle, and from the network on the globe it's called a grid. Okay, the point at which the latitude and longitude meet help us to locate a place. Okay, so how can the locate the place? For example, open the index page and look from Agra. Okay, and the alphabetical order show page number. Okay, and the page is suppose example you take the page number is 10 and go to the page number 10 and look at the borders to the map. You will find numbers of left and right borders. Top and bottom borders show letters, and join the C4 to know the location of the place. Okay, so what is the difference of the latitudes and longitude? Latitudes and longitudes are imaginary lines that are marked on the globe. The difference between latitude and longitudes are: first, latitudes, lines that run around east and from the west. Okay. Second is latitude are measured in degrees 0 degree and they are 180 degree. Okay. And latitude are parallels, they never meet. Same is longitude. Longitude are lines that circle earth from the north to south, and longitude meet at the poles. Which poles? North pole and south pole. Okay. So what are some marking on the globe? Let's revise again. Okay. Okay, first line is north hemisphere is called north pole. This is the south pole. Okay, this is the latitude. Okay, and this one is south pole. Okay, latitude, this line is called latitude, and this line called longitude. Latitude. Okay, and ये वाली लाइन कौन सी हुई? इक्वेटर. इक्वेटर के जस्ट पास में जो पासिंग थ्रू जो ये येलो लाइन जा रही है इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन. ओके, दे शो द डिग्रीज. ओके, एंड इट शो द ऑल द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस लाइन्स. ओके, दे डिनोटेड द 0 degree. Okay, so here the globe, they define the all lines. Which lines? Latitudes, longitude, prime meridian, degrees, north hemisphere, south hemisphere, north pole, south pole, equator, and Greenwich line. Okay, so here the hard words of these chapters. First is hemisphere, second is meridian, third is parallels,
fourth physical, fifth reference, sixth equator, seventh distance, eighth Capricorn, and ninth is decreasing. Okay. Next is new word. First word is parallels. The imaginary lines around the earth at the same distance from the equator. Okay. And next, second is meridian. Lines drawn north from the north pole to the south pole on a map or a globe is called meridian. So here is the point to the remember. Okay. You revise at your home. It's your homework. Okay. So we have discussed today globe, parallels, fact about parallels, numbering the parallels, importance lines of parallels, okay, and same is meridian, fact about meridians, numbering the meridians and locating places. Okay, so here we finish our chapter 2nd, meridian and parallel. Okay, see you soon. Take care.